I want to discuss some rules and regulation according to this law that you have to follow. First of all, I always appreciate your post students. Prefer questioning their lecture. Always get your basic right. सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। Questioning is the basic right of the students, and you have to question throughout the lecture. In fact, I don't have any magic stick, any magic power to know that this topic is clear. You have to question. Otherwise, I suppose that this topic is clear. So that's your basic right, and I hope you prefer questioning throughout the semester. And second, avoid any kind of disturbance during the lecture. I am here on whiteboard, and you make noise. I totally disturb this one. So kindly, that's my request, humble request, to avoid any kind of disturbance during the lecture. And according to this course, in fact, this one is simple. Maybe you suppose that numerical method, and we are students of engineering. So how can we compensate with this course? So it's an interesting course. Throughout, you learn a lot of things during this lecture. In fact, mathematics के बारे में जिस टाइम भी हम बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में ये जो न्यूमेरिकल मेथड है, ये इसका मेन टॉपिक, मेन कोर्स है मैथमेटिक्स का, क्योंकि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट जो मेथड्स हैं, हमने वो सीखने होते हैं. हमारा जो मेन फोकस है कि डिफरेंट टाइप्स का डाटा है, डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस हैं. आपने कोई इनिशियल लेवल पे जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स पहले सीखे होंगे. फॉर एग्जांपल मे बी लीनियर अलजेब्रा, शायद आप फेमिलियर होंगे लीनियर अलजेब्रा से, तो उसमें डिफरेंट आपने मेथड्स किए हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के. फॉर एग्जांपल गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, ये वो मेथड्स हैं जो आपने इनिशियल स्टेजेस पे किए हैं. हमने यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं, कुछ ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं जिनको सॉल्व करना, इन मेथड्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है. इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि कुछ मेथड्स ऐसे आ जाते हैं जिनका एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. ऐसा भी है कि उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन हम नहीं फाइंड कर सकते. तो हमारा टारगेट होता है कि चलें हम जो उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, आप उसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं. तो ये न्यूमेरिकल मेथड हमें डिफरेंट जो डाटा है या डिफरेंट इक्वेशंस हैं, डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं फाइंड कर सकते तो कम से कम हम उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है हम वो फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए. उसमें हमारे पास इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली भी आ जाएगी, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, और डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आएगा, और अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस which contains logarithmic and algebraic portion together that are called transcendental equations. तो transcendental equations को हम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट जो हमारी टेक्निक्स होंगी हम उनको यूज करेंगे. इतना मैं पहले दिन आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कोर्स जो है ये इंटरेस्टिंग रहेगा और आप इसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, बल्कि होपफुली काफ़ी चीज़ें सीखोगे जो इंटरेस्टिंग भी रहेंगी सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए. तो ये सबसे पहले तो कुछ चीज़ें इनिशियली जिनको डिस्कस करना चाहूँगा, आप उनसे फेमिलियर हो काफ़ी हद तक. नंबर्स हैं, नंबर से आगे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे. लेकिन स्टार्ट से पहले कि न्यूमेरिकल मेथड है, तो व्हाई डू वी नीड न्यूमेरिकल मेथड्स? One can ask a simple question that why do we need numerical methods? In fact, we have some problems in different areas, different scientific fields like physics, chemistry, or even in the field of engineering. We can have different problems. So first, to solve that problem, we convert that particular problem into a mathematical model. Now, after converting this problem into a mathematical problem, we have to solve that mathematical model.
to solve that mathematical model, we don't have any analytical method. And maybe sometime we have analytical method, but that analytical method is quite time consuming. Numerical methods are fast and their accuracy is quite better than the analytical method. So at that moment, we need a numerical method to solve that mathematical problem. To solve that problem, we need a numerical method. That's why we need numerical method. So we can say that sometimes we do not have any analytical method to solve the problem, or we do have analytical method, but that analytical method is quite time consuming. So that's why we need a numerical method. Next one, number system. We have two types of numbers. First one, exact number that have exact value, and approximate number. For example, if we say that 3.14 is approximate to pi, not exactly equal to pi, but that one is approximate to the value of pi. The value of pi is the ratio between the circumference and the radius of a circle. So that one is the exact value. 3.14, 3.1416 up to so on. That one is the approximate value. 1 over 3 is the exact number, exact value. But 0.333 after 4 decimal places, this one is the approximate value of 1 over 3, not exactly equal to, because this one is not terminate. It was recurring but non-terminating. So 0.3333, this one is the approximate value of 1 over 3. So 1 over 3, pi, 2, 1, 3, any natural number, these ones are the exact numbers. But sometime we have an approximate number, approximate value. For example, 3.14 and 0.333, these are the approximate values. So there are two types of numbers, exact numbers and approximate numbers. Examples of exact numbers are here, and approximate value we can consider 3.1416 for the value of pi. This one is the approximate value of pi. Then after that, significant digits. It was a basic concept of mathematics. In fact, maybe 7-8 standard concept about significant digits. What are the significant digits? Significant digits are the digits that are used to express the value of a number. Those digits that are used to express the value of a number. जो किसी भी नंबर की वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, उन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं. एंड यू आर फेमिलियर दैट 1 to 9 are always used as a significant digits. There are some rules for significant digits that 1 to 9 are always treated as a significant digit. But 0, it depends on nature where 0 occurs. For example, if 0 appears on the most left hand side of a number, then we do not consider it as a significant digit. But if 0 appears between any two significant digits means 1 to 9, between any two significant digits, then we consider 0 as a significant digit. We count it as a significant digit. And if 0 appears most right of a number, then 0 also considered as a significant digit. For example, if we consider here these examples, 3.1416 and all these digits, they have 5 significant digits. Here, third one, here 0 appears between any between these two significant digits, 4 and 6. So treated as a significant digits. But here in this case, 0 appears most left side. So it basically just denote the position of decimals. So that's why we use here 0. Otherwise, it contains no value. Just 2 and 3 are the digits that are used to represent the value of this number. So 2 and 3 are the significant digits in this number, 0.0023. So this has two significant digits, 2 and 3. After that, here is the rules for these significant digits that I have always told you. Then after significant digits, we sometimes round off the numbers. You know about the rules to round off a number.
if we have some non-terminating value, or sometime maybe we have terminating value, but we have to specify some uh, positions after decimal positions. We have to consider some positions after decimal, so that's why we round off numbers. For example, if we have 1 over 3 and we count its approximate value 0.3333 up to so on, this one is non-terminating. So if we terminate this one, so we have to round off this number. To round off this number, we have some rules about round off a number. If we consider n decimal position of a number, the digit after that nth position, if this one is exactly half of the number, then we uh, count the nth number one time greater than the previous one. And if this one is less than half of the unit, then we remain the numbers unaltered, same. We didn't change it. And if the number is exactly half, 5, if it was exactly half means it was 5, then the number before at the nth position, if it was an odd number, then we make it one time greater, and if it was an even number, then we remain it same. I think maybe increase the nth digit by unit if it was odd. Bilkul, exactly. If it was an odd number, then we make it one time greater, and if it was an even, we remain it same. There are different techniques for rounding off. Some maybe in some books you can see he says it as a chopping, that you may remain the number same or you may change it. This one is some books, some authors denote this notion as a chopping and rounding. In chopping, they says that don't change the number, just skip the all digits after the nth position, and remain the number same. Maybe either it was greater than half of the unit, 6, 7, something. Don't change the nth position, remains it same. And in rounding off, we use these techniques that change the number greater one time if it was greater than half of the number, and remain same if it was less than the half of the number. So these are techniques for rounding off, and our discussion starts from here, this rounding off, because when we round off a number, at that moment we have some error, we get some error. For example, if we have 0.3333 at 4 decimal places, for example, when we consider this number, say 0.3333, and if we put this one as 0.33, say 4, say, or okay, let's skip this one. Maybe we put this in this sense that we have the number 0.3337. Now if we get, after rounding off this, have this one. Now here comes some error, because if we consider the exact number
that one is 0.3337. And now after rounding off this number, we get 0.334. Means if we put here 0, suppose, then this number is after 3340, we get 40, while the exact number is 37. So here comes some error in this sense. We get some error. The error is 0.0003. The error is 0.003. We can say that error is equal to 0.0003. This one is the error here. So we have to find different types of errors in rounding off and in different techniques. When we use different techniques, our basic goal is to solve different methods, use different methods to solve solutions for equations, for system of linear equations, for some data, to solve some data. We use different techniques, and then we find error in that techniques, how much error we get. So there are two types of errors. Basically, we have two types of errors. Basically, we have two types of errors. First one is round off error and truncation error. In round off error occurs when we round off some numbers, and truncation error is the error when we use some series like Taylor series or Lagrange series, Maclaurin series, sorry, Taylor series and Maclaurin series. We truncate that series. In other words, we can say that we fix that series at some terms, maybe 4 terms, after 5 terms, after 10 terms, we round off that series. So by terminating that series, we get truncation error, because that we get some series. For example, f of x is equal to x cube plus 3x over 3 factorial plus x5 over 5 factorial plus x7 over 7 factorial, and so on. When we terminate that series after some terms, so we didn't have exact series, exact function, we get some error at that moment. So that error is called the truncation error, truncated error. Later, when we discuss the Newton-Raphson method, after this one, when we discuss Newton-Raphson method, we derived Newton-Raphson method. At that moment, I recall this one truncated error, truncation error, because there we terminate the series. So at that moment, I again recall this one truncation error. Round off error is नहीं बस लॉगिन लॉगिन करिएगा ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू तो राउंड ऑफ एरर जो है ये नंबर्स को जिस टाइम हम राउंड ऑफ करते हैं उस टाइम में ट्रंकेशन एरर जो है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल है, कोई सीरीज है, उसको जिस टाइम हम टर्मिनेट करते हैं तो वहां पे जाहिर है हम वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ले रहे, एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं ले रहे, हम उसकी कुछ टर्म्स को कंसीडर कर रहे हैं। कुछ टर्म को कंसीडर करने से जो बाकी टर्म्स वहां पे स्किप हो जाएंगे, उनकी वजह से वो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। उस एरर को हम बोलते हैं कि ट्रंकेटेड एरर है, ट्रंकेशन एरर है, उसको हम ट्रंकेशन एरर के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो जो राउंड ऑफ एरर्स है, इसमें हमारे पास आगे 3 टाइप्स आ जाएंगी हमारे पास जो राउंड ऑफ एरर है, बेसिकली जिनको एरर्स के तौर पे ट्रीट करते हैं। वो मेन यही है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर जो है हमारे पास एग्जैक्ट नंबर और जो अप्रोक्सीमेट नंबर है उनकी के डिफरेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट एरर है। द डिफरेंस बिटवीन द exact value and the approximate value. In fact, absolute value of, not the difference, the absolute value of the difference of the exact value and the absolute. Where x
exact value and x1 is the approximate value. So the difference of these values, approximate value of the difference of these two values is called the absolute error, denoted by EA. And the relative error, which was defined as x minus x1 over x, it means that the ratio between the absolute error and the exact amount, exact number. This one keep in your mind, that we count the ratio with exact number, not the approximate number. The ratio between the absolute error and the exact number is called the relative error. It was denoted by ER. And the percentage error means simply multiply this one by 100 and we get the percentage error of this number. Here is the example of error to calculate the error, where he says that x1 is the approximate value of pi, this one 3.1428571, and its true value is 3.1415926. This one is the true value. We suppose this one as a true value, and the approximate value is 3.1428571. This one is the approximate value. So he says that calculate the absolute error and the relative error. You can also find the percentage error by multiplying this one as 100 with 100. So absolute error is the difference of these two numbers, x minus x1, its absolute value. You can change. You can say that this one is also x1 minus x, because we count it as absolute value. So this makes no sense. X1 minus x remains same because we consider its absolute value. x1 minus x करेंगे, उसके साथ भी जो वैल्यू आएगी साइन का डिफरेंस आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको अगेन पॉजिटिव कर देगी हमारे पास, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो आप x1 माइनस एक्स बोल सकते हो, x माइनस x1 बोल सकते हो, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम काउंट कर रहे हैं. कुछ बुक्स ऐसी हैं कि मे भी आप कोई बुक फॉलो करो, उसको आप स्टडी करो. कुछ बुक्स में इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ट्रीट नहीं करते. मतलब जो मैंने यहाँ पे जिस बुक से मैं करवा रहा हूँ, एक अगर आप विदा मूर्ति की बुक पढ़ेंगे तो विदा मूर्ति की बुक में जो है वो इसको एब्सोल्यूट एरर के तौर पे ट्रीट कर रहा है. लेकिन वहीं पे शास्त्री की बुक है, उस बुक में वो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर नहीं करता. नेगेटिव है तो नेगेटिव उसको कंसीडर कर रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंसीडर कर रहा है. लेकिन जो ज्यादा बुक्स हैं वो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे ट्रीट करते हैं, क्योंकि नाम से भी ये जाहिर है एब्सोल्यूट एरर हम उसको बोल रहे हैं, इट्स मींस कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर करेंगे. एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करने के लिए हम उसका मॉड जो है वो लेंगे यहाँ पे. तो कुछ बुक में भी ये वाली चीज आप को मिल जाए कि वहाँ पे उसने x माइनस x1 ही फिर उसको लिखा है. वहाँ पे ये वाली चीज फिर ध्यान में रहे कि वहाँ पे हम x माइनस x1 ही उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हम उसको काउंट कर रहे. यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वहाँ पे नेगेटिव का साइन जो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. रिलेटिव एरर, इसमें उसने फाइंड किया कि उनका जो डिफरेंस है उसको एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर है. आपके पास कोई किसी भी सेंस में वो पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक बुक थी, उसमें एग्जांपल एक चेक कर रहा था, वो कह रहा था कुछ नंबर्स उसने दिए हुए थे 1/3 और वो साथ में और कुछ नंबर्स देख वो ये कह रहा था कि आप ये बताएं कि कौन सी वैल्यू जो है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है या एग्जैक्ट वैल्यू है. तो एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हम किस तरह कह सकते हैं, हम उनका एरर ही फाइंड करेंगे, उसके साथ एरर फाइंड करके देख लो किसका एरर जो है वो कम आ रहा है, किसका एरर ज्यादा आ रहा है. तो एरर्स जो है वो इस चीज के लिए भी यूज करते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो इसकी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है. भाई आप उसके साथ उसका डिफरेंस फाइंड कर लो, उसका जो एरर है वो फाइंड कर लो. डिफरेंस फाइंड करने तो जहाँ पे एरर कम होगा इसका मतलब है कि वो उसके ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. हमारा टारगेट ही ये है. इससे आगे जो है हमने वहाँ पे आइट्रेशंस फाइंड करनी है, आइट्रेटिव फार्मूलाज को यूज करते हुए हमने वहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है कि सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इससे बेटर सोल्यूशन फाइंड करो, इससे बेटर सोल्यूशन फाइंड करो. हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो ज्यादा बेटर है. जहाँ पे एरर जितना कम हो रहा है वो हमारा उतना एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो उतनी बेटर होगी. तो हम अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को आगे ट्रीट करना है कि कौन सी हमारे पास वैल्यू जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा बेस्ट है. ओके, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही है. अटेंडेंस जो है वो मैं कर लूँ. जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है भाई आप भी थोड़ा एक्टिव रहिएगा भाई, ज़्यादा मुझे इंतज़ार ना करना पड़े अटेंडेंस के लिए ना.
अटेंडेंस के रूल्स का आपको पता है भाई, यहाँ पे वीक्स में कम से कम अटेंडेंस, और इसमें एट दी एंड अगर किसी के लिए कोई इशू बनेगा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अटेंडेंस के लिए ये आपका अपना वो है, और उससे अलावा जो लास्ट पे चल के एक टीचर के बारे में स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलतफहमी का शिकार होते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा टीचर को शिकायत कर रहे होते हैं कि सर आपने हमें कम मार्क्स दिए हैं या आपने हमें फेल कर दिया है। तो टीचर का उसमें कुछ नहीं होता, स्टूडेंट उसमें कम मार्क्स ले रहे होते हैं। बजाय इसके कि एट दी एंड आप में से अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन अगर एट दी एंड कोई ऐसी बन जाती है सूरत हाल किसी स्टूडेंट की, तो मुझसे आके ये कहे कि सर आप मुझे फेल कर रहे हैं, तो मैं आज ही मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ ना कि काइंडली आपने मेरे कोर्स में फेल नहीं होता। जैसे कि लास्ट डे पे आप मुझसे रिक्वेस्ट करो, मैं फर्स्ट डे पे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि ऐसी नौबत ना आने दो कि आप मेरे कोर्स में फेल हो। मैं फेल नहीं करूँगा, आपने फेल होने, मैं कम मार्क्स नहीं दूंगा, आपने कम मार्क्स देने हैं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये ज़हन में रहे, टीचर के बारे में ये मेरी गलतफहमी निकाल देनी है काइंडली। ये तक हो सकता है फेयर मार्किंग करता हूँ, इससे पहले भी इंशाल्लाह अभी भी फेयर मार्किंग करूँगा, बाकी स्टूडेंट के ऊपर है। और अटेंडेंस में भी ये आपका अपना वो है, आप नहीं आ रहे हो तो उसमें मेरा कसूर नहीं है ना। अटेंडेंस अगर किसी स्टूडेंट की शॉर्ट हो जाएगी तो उसका अपना फॉल्ट होगा, एट द एंड मुझे ब्लेम नहीं कर सकते आप। ये दो तीन चीज़ें ध्यान में रहे। और अटेंडेंस के लिए अभी तो चले आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीक में भी इसी तरह चले, लेकिन उससे ऑनवर्ड जो है 5 to 10 मिनट्स तक जो है वो मैं अटेंडेंस के लिए रिलैक्सेशन दे सकता हूँ। कोई भी मजबूरी हो सकती है, कोई लेट आ सकती है, रेगुलरली इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, बाकायदगी से वो लेट आ रहा है, तो वहाँ पे जो है मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूँगा। फिर ये ध्यान में रखना है कि 5 से 10 मिनट तक रिलैक्सेशन दे सकता हूँ। उससे लेट जो आएगा वो फिर मेरे पे है, हो सकता है किसी दिन अच्छा मूड है तो मैं उसको अटेंडेंस कंसीडर कर लूँ उनकी, अगर नहीं है ये फिर मूड पे डिपेंड करता है, सबका एक जैसा मूड तो होता नहीं है डेली। तो ये ध्यान में रही ये वाली चीज़ें थोड़ी। मैं इमरान हसन सऊद कामरान फहद इमरान मोहम्मद अहमद इजाज मोहम्मद तलहा मोहम्मद हारिस नतीक नतीक है सॉरी फातिमा खान अली असद आप सलमान नजीर अवैस प्रेजेंट कमर सर सलमान प्रेजेंट सलमान नाजिर ओके Present, सलमान sir. नाजिर प्रेजेंट है या सलमान नजीर प्रेजेंट है सर। ओके सलमान नजीर प्रेजेंट है। अवैस कमर प्रेजेंट सर। गजाला बीबी मोहम्मद उजैर अनम मुजाहिद अम्मार जुनेद प्रेजेंट सर। कैफुर रहमान प्रेजेंट सर। ईशा आरिफ अब्दुल राफे प्रेजेंट सर। बिलावल अहमद प्रेजेंट सर। मोहम्मद आलियान प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद मोहम्मद आलियान प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। अब्दुल हन्नान प्रेजेंट सर।
इहसान अली शाह, इहसान अली, दानिश खान, Present, sir. Danish Khan present. दानिश खान प्रेजेंट है भाई। Yes, sir. Ihsan Ali present, है, sir. ओके, दानिश अली, दानिश खान सॉरी, Present. एहतिसामुल हक, Present, sir. मरियम अली, Present, sir. हाशिर बिन शकील, Present, sir. सैयद बाबर तमीज, Present, sir. हामिद अयूब, Present, sir. हसान खालिद, फातिमा खालिद, Present, sir. हमजा अमजद, अब्दुल्ला शेख, Present, sir. सरमत, Present, sir. मोहम्मद मुबीन, Yes, sir. मोहम्मद उमर फारूक, Yes, sir. जाहिद वाजिद, सॉरी जैद वाजिद, Present, sir. Present, sir. रमेश आमिर, Present, sir. फैजान रियासत, Present, sir. Present, sir. Present. अंबर आरिफ, Present, sir. तारेब, Present, sir. Sir, Lare present. अब्दुल बासित, Present, sir. एहसान अली, Sir, Hassan Ali है. सॉरी हसन अली, Yes, sir. Present. माज बिन ताहिर, Present, sir. आयशा सिद्दीक, Present, sir. ओके जी, अल्लाह हाफिज। अहमद हसन, ये आपका इसमें नाम नहीं आया, नहीं आया ना? अच्छा, अहमद हसन ऊपर, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.